48. Simple tenses. There are three kinds of simple tense. First is present simple tense, second is past simple tense, and third is future simple tense. Now I am going to listen you all simple tenses. I request all of you that please listen to me carefully. Tense number 7. Present simple tense active voice. Positive sentence. Role subject plus first form plus object. For example, I teach, मैं पढ़ाता हूँ. Negative sentence. Role subject plus do dash plus not plus first form plus object. For example, I do not teach, मैं नहीं पढ़ाता हूँ. Interrogative sentence. Role do dash plus subject plus first form plus object. For example, do I teach, क्या मैं पढ़ाता हूँ. Tense number 8. Present simple tense passive voice. Role object plus is rm plus third form plus by plus subject. For example, is English taught? Yes, English is taught. No, English is not taught. Tense number 9. Past simple tense active voice. Positive sentence. Role subject plus second form plus object. For example, I taught, मैंने पढ़ाया था. Negative sentence. Role subject plus did plus not plus first form plus object. For example, I did not teach, मैं नहीं पढ़ाया था. Interrogative sentence. Role did plus subject plus first form plus object. For example, did I teach, क्या मैंने पढ़ाया था. Tense number 10. Past simple tense passive voice. Role object plus was verb plus third form plus by plus subject. For example, was English taught? Yes, English was taught. No, English was not taught. Tense number 11. Future simple tense active voice. Role subject plus will plus first form plus object. For example, will you teach? क्या आप पढ़ाएंगे? Yes, I will teach. हाँ मैं पढ़ाऊंगा. No, I will not teach. मैं नहीं पढ़ाऊंगा. Tense number 12. Future simple tense passive voice. Role object plus will plus be plus third form plus by plus subject. For example, will English be taught? Yes, English will be taught. No, English will not be taught. My dear friends, as you listen me, I request you that please remember this lesson like me. And to understand these all simple classes, watch the next video clip. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं. और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 48 को मुफस्सल अंदाज में समझाने वाला हूं. आज के इस चैप्टर में हम इंग्लिश टेंसेस में सबसे ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल टेंस सिंपल टेंसेस को समझने वाले हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने मुख्तसरन तौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस को मुफस्सल अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा. इन तमाम टेंसेस को तफसीली तौर पर माक़बल में लेसन नंबर 29 से लेकर लेसन नंबर 34 तक मैंने मुफस्सल अंदाज में समझा दिया था, लेकिन मुख्तसरन तौर पर शॉर्ट टेंसेस के ज़ैल में इसको एक बार फिर से समझाना चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है. इजहार माफी ज़मीर के ज़्यादातर तरीक़े इसी टेंस में पाए जाते हैं और ये सिंपल टेंसेस सबसे ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल है, क्योंकि जब भी आप ज़माने हाल के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जब कभी भी आप माजी के बारे में बात करते हैं तब आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जब कभी आप फ्यूचर की बात करते हैं तो सिर्फ वाहिद फ्यूचर सिंपल सबसे ज़्यादा मुस्तमाल होता है और फ्यूचर की तर्जमानी ज़्यादातर फ्यूचर सिंपल टेंस से की जाती है. कल के क्लास में मैंने आपको ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस पर रोशनी डाला था और आज मैं आपके सामने सिंपल टेंसेस पर रोशनी डालने जा रहा हूं. मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को गौर से देखिए और तमाम सिंपल टेंसेस को बहुस्न खूबी एक मरतबा फिर से समझने की कोशिश कीजिए. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबक को शुरू करते हैं. यहाँ आई एम गोइंग टू राइट हियर लेसन नंबर 48. In this lesson, I am going to teach short, simple tenses.
यानी मुख्तसरन अंदाज में सिंपल टेंसेस को आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे। एज यू नो वेरी वेल देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिंपल। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के सिंपल होते हैं। फर्स्ट होता है PRESENT, प्रेजेंट सिंपल टेंस। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। माक़बल में आपको मुफस्सल अंदाज में समझाया था व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट्स, जब कभी भी हम आदतों की बात करते हैं, डेली एक्शंस, रोजमर्रा किए जाने वाले कामों की बात करते हैं, रिपीटेड एक्शंस, जो काम बार बार किए जाते हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं, या फैक्ट्स यानी हकीकतों के बारे में जब हम बात करते हैं, और उर्दू और हिंदी ज़बान में जब उसके ताल्लुक से हम किसी जुमले का कलाम करते हैं तो आम तौर पर उस जुमले के अंत में एक बात मुश्तरका तौर पर पाई जाती है और वो है ता। और ता के साथ अगर हम है लगा दें तो ये ता है, जिसमें ता ती ते सिंपल पर दलालत करेगा और ये है प्रेजेंट पर दलालत करेगा। इस तरह ता है प्रेजेंट सिंपल की अलामत बन जाएगी। इसी तरीके से ती है या फिर ते है या फिर ता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड दिस ऑल सिंबल्स इन एनी उर्दू एंड हिंदी सेंटेंस, प्लीज डायरेक्टली, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उर्दू और हिंदी जबान की किसी भी जुमले में ये अलामतें पाई तो आंख बंद करके आप उसको फ्यूचर सिंपल टेंस तस्वर कीजिए। आइए अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की तीन कैटेगरीज होती है। पहला है POSITIVE, पॉजिटिव सेंटेंस। जब कभी भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस से ताल्लुक रखने वाले जुमलों की बात करते हैं और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में तर्जमा करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट और प्लस FIRST, फर्स्ट FORM, फॉर्म, प्लस OBJ, ऑब्जेक्ट की। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये कहना है कि मैं पढ़ाता हूँ, सो आई कैन से दैट आई और उसके बाद TEACH, टीच। और अगर इंग्लिश इसकी मफूल बिही को लाए तो ये इंग्लिश इसका मफूल भी यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये पूरी इबारत बन जाएगी आई टीच। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए फर्स्टली वी विल हैव टू यूज सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी यूज डू और डज। We use does with singular subjects and we use do with plural subjects। जो plural subjects हैं उनके साथ हम do को इस्तेमाल करेंगे और singular subjectों के साथ हम does को प्रयोग करते हैं। And after that we will have to use not, not, do not or does not। And after that we will have to use verb first form। फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना होगा। उसके बाद आपको अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू एंड आफ्टर दैट NOT, नॉट, आई डू नॉट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म TEACH, टीच एंड ENGLISH, इंग्लिश। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू यूज डू विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू यूज सब्जेक्ट। इफ माय सब्जेक्ट इज प्लूरल I use do and if my subject is singular then I use does and after that I'll use here verb first form plus OBJ, object. Here is your full structure of making present simple tense interrogative sentence। ये आपका मुकम्मल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डू को या डस को प्रयोग करेंगे वाहिद फाइलों के साथ, यानी अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस को मुकद्दम करेंगे और अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू को मुकद्दम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट हियर डू आई टीच इंग्लिश।
क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ? यस डियर स्टूडेंट्स, डू आई टीच इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ? डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने, प्रेजेंट सिंपल टेंस उर्दू और हिंदी जबान के ऐसे जुमलों को तर्जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह हो। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त आप गौर करें कि उस जुमले का ताल्लुक पॉजिटिव से है या निगेटिव से है या इंट्रोगेटिव से है। अगर वो जुमला पॉजिटिव सेंटेंस से ताल्लुक रखता है तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिए, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। और अगर वो जुमला निगेटिव सेंटेंस से ताल्लुक रखता है तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को यूज कीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। और अगर वो जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ताल्लुक रखता है तो डू डज को मुकद्दम करके इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ? डियर वीवर्स, क्या आप अपनी इंग्लिश को लेकर परेशान हैं? क्या आप इंग्लिश नहीं जानते हैं? क्या आप इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका माना और मतलब नहीं समझ पाते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं? क्या आप बदलते वक्त के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत महसूस करते हैं? क्या आप अंग्रेज़ी ज़बान को अपनी ज़िंदगी का जुज़े लायन फ़क तस्वुर करते हैं? क्या आप इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने में वर्ड्स मीनिंग की कमी और ग्रामर में वीकनेस महसूस करते हैं? इफ़ यस, then my 90 days English speaking course is your complete solution. Hi, my name is Khurshid Anwar Qasmi, a successful expert English teacher, writer and trainer. I have been running International Institute of English Language since 2011. I am offering you a 90 days English speaking course. In this course, I'll teach you how to speak, write and read English language. I'll solve your grammatical doubts and weakness. I'll increase your words meaning bank and I'll provide you a good practice. I'll provide you public speaking, communication skill and interview classes. So join my live online English classes or purchase recorded online English speaking course. Just dial 752-000-7006 to know more information. To take admission, click the blue link and register yourself. Happy learning, empowering, educating. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.